Hello friends, welcome to Bankers platform. Today we have come again with new set of questions and these questions are memory recall questions for jaiib exam and our subject is PPB. So let's start friends with our first question. So friends, before starting, please like, share and subscribe to our channel so that you can get the latest notification and share this video with your friends who are preparing for JIB exam and they can also get the benefit. So let's start. So friends, our first question is bill of lading is a negotiable instrument under which act? So you have to give the answer. Bill of lading is a negotiable instrument under which act? So the correct answer is it is a negotiable instrument under Transfer of Property Act and the section is 137. तो जो बिल ऑफ lading है वो एक negotiable instrument है under Transfer of Property Act. So our next question is ADR is only available in which market? So friends, ADR you all would be knowing, American Depository Receipt. So this is available only in a particular market. So which market is that? So that is US market. So we cannot find the ADRs everywhere. It is only available in the US market. And GDR is the Global Depository Receipt. So that you can get in any type of market. Our next question is CRR is under which act? So CRR, as you all would be knowing, CRR is cash reserve ratio. So CRR is under section 42 1 of RBI Act 1934. And friends, what is the present rate of CRR? Present rate of CRR is 3%. Questions can also come, what is the minimum CRR? And minimum CRR is 3%. And if it is asked what is the maximum CRR the RBI can impose on the banks, so that is 20%. So RBI can impose up to 20% and minimum is 3%. Presently, if you will see that the CRR is 3%. So friends, these questions are very important because these questions have already come in the previous exams. So today we have come with the memory recall questions so that you will be knowing that from which area the questions are asked, like CRR, ADR, GDR, bill of lading, transfer of property act. So these topics are covered. So the questions which are related, which are near to these topics, so you can also prepare them so that that question can be hit in the exam. So next is SLR. SLR is under which act? So the correct answer is section 24 of Banking Regulation Act 1949. So friends, here one trick is there. If you have to remember the CRR, जो CRR है वो कम होता है and SLR जो है वो ज़्यादा होता है. What is the present rate of SLR? So the present rate of SLR is 18%. SLR जो है वो ज़्यादा है, मतलब 18% है और CRR का रेट कम है, दैट इज 3%. सो व्हाट विल हैपन कि जिसका रेट कम है उसका सेक्शन जो है, सेक्शन इज इन बिग नंबर, दैट इज 42. सेक्शन 42 विल बी ऑफ CRR. और जिसका अमाउंट ज़्यादा है 18%, SLR इज 18%, तो उसका जो सेक्शन है वो कम है, दैट इज सेक्शन 24. So in this way you can remember the CRR is coming under section 42(1) of RBI Act and SLR is coming under section 24 of Banking Regulation Act. Sometime question is asked, they will give you RBI Act, section 42 RBI Act, section 42 BR Act, section 24 BR Act, section 24 RBI Act to confuse you.
सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। और एसएलआर जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है। एंड सीआरआर, सीआरआर में दो बार आर है, तो वहां से आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि सीआरआर एंड आरबीआई, जिसमें दो बार आर है दैट कम्स अंडर आरबीआई, और जिसमें सिंगल आर है दैट कम्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर। सो what is the minimum amount of SLR that RBI can impose on bank? So minimum SLR is 0%. And if we talk about the maximum, so that is 40%. So up to 40% RBI can impose the SLR. So let's move to next question. Regulator of insurance market. So I think it's a very easy question, but this type of question has already come in previous exam, so I have taken this question. So it is IRDA. IRDA is regulator of insurance market. And if it comes, who is the regulator of banks, that is RBI. And who is the regulator of capital market, that is SEBI. SEBI is the regulator of capital market. Who is the regulator of money market? So RBI is the regulator of money market. So let's move to next question. Question number 6. Dash is an investor or investment fund registered in a country outside of one in which it is investing. Institutional investor most notable include hedge funds, insurance company, pension funds, and mutual funds. So, who is this investor? So, you have to give the answer, and that is FII. FII is the investor. That is foreign institutional investor, दैट इज एफ आई। जो एफ आई है वो एक ऐसा इन्वेस्टर है दैट फंड या इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड इन ए कंट्री आउटसाइड ऑफ द वन इन विच इट इज इन्वेस्टिंग। लाइक इंडिया में जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। So let's see our next question. Question number 7. A dash is a company that pools money from many investors and invests the money in securities such as stocks, bond, and short-term debt. So this is very easy. So which is that company? That company is mutual mutual fund। दैट कंपनीज म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड कंपनी है फ्रेंड्स, वो बहुत से इन्वेस्टर्स से जो है पैसे इकट्ठे करती है और उन्हें स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म डेट्स में इन्वेस्ट करती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। बैंक शुड नॉट सैंक्शन अ न्यू लोन और एडिशनल फैसिलिटी टू बोरोअर्स अपेयरिंग इन आरबीआई list of willful defaulter for a period of dash years from the date of publication पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट बाय आरबीआई। तो कोई भी अगर विलफुल डिफॉल्टर है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आपको आ सकता है, दैट इज कि जो विलफुल डिफॉल्टर है किसे कहा जाएगा? विलफुल डिफॉल्टर किसने, लाइक एक ए पर्सन इज देयर, उसने कितने अमाउंट का डिफॉल्ट किया है तभी आरबीआई उसे विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में पब्लिश करता है। सो दैट इज 25 लाख। जितने भी बोरोअर्स हैं 25 लाख एंड अबव, तो उन बोरोअर्स को विलफुल डिफॉल्टर्स में आरबीआई पब्लिश करता है, और कितने पीरियड के लिए विलफुल डिफॉल्टर को लोन नहीं देगा बैंक। सो here you have to give the answer. So the correct answer is 5 years. So अगर कोई भी willful defaulter है और after some time that person has paid his debts, so after that what will happen, that for 5 years he will not be getting any loan. After 5 years banks can sanction new or additional facility. So let's see question number 9. Banks aggregate investment in shares, certificate of deposit, bonds, etc. shall not exceed the dash percent of bank's own fund as an at the end of previous year। कि जो भी बैंक्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है शेयर में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड्स में, वो बैंक्स के अपने फंड से कितने परसेंट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर।
So you have to give the correct answer, and that is 40%। जो बैंक का 40% जो फंड है उसका अपना फंड है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। Dash is the sale and purchase of government securities and treasury bills by RBI or the central bank of the country. So, what that is called? That is called open market operations. So, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें जो आरबीआई है वो सेल एंड परचेज, वो सेल करती है एंड परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। So that is called open market operation. So next question is question number 11. There are three types of treasury bills issued by the government of India via auctions for dash dash and dash days. कितने दिनों के लिए जो ट्रेजरी बिल है वो इशू होता है? So the answer is it is issued for 91 days and 182 days, and the third is 364 डेज। जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एक 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए एंड 364 डेज के लिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मनी दैट इज लैंड फॉर वन डे इन दिस मार्केट इज नोन एज। सो यू कैन से हियर इन मनी मार्केट, द मनी दैट इज लैंड फॉर वन डे इन मनी मार्केट इज नोन एज। अगर हम एक दिन के लिए कोई पैसे को लैंड कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज कॉल मनी। इट एक्सीड वन डे बट लेस देन 15 days इट इज रेफर्ड एज। एंड द सेम कंडीशन, अगर वो एक दिन से ज्यादा है और 15 दिन से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? इन दैट केस इट इज कॉल्ड नोटिस मनी। इन मनी मार्केट अगर हम एक दिन से ज्यादा और 15 दिन से कम के लिए लैंड करते हैं दैट इज कॉल्ड नोटिस मनी। मनी रेफर्स टू मनी लैंड फॉर 15 डेज और मोर। 15 दिन से ज्यादा के लिए अगर हम करें तो दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ मनी? दैट इज टर्म मनी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर इशूइंग commercial paper, the tangible net worth of the company as per the latest audited balance sheet should not be less than rupees dash। अगर कोई भी कंपनी है जो कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है तो उसकी जो नेटवर्थ है, टेंजिबल नेटवर्थ है, वो एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट कितनी होनी चाहिए? मीन्स उससे कम नहीं होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज 4 crores। सो 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Dash is made when an already listed company makes either a fresh issue of security to the public or an offer for sale to the public through an offer document। तो एक कंपनी क्या इशू करती है? दैट इज कॉल्ड एफपीओ। एफपीओ एफपीओ इज फर्दर public further public offer। So further public offer is made when already listed company makes either a fresh issue of security to the public or an offer for sale to the public through an offer document। So next question is a bond giving the investor the option to convert the bond into equity at a fixed conversion price is referred to as dash bond। एक ऐसा बॉन्ड जो इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देता है कि वो अपने बॉन्ड को कन्वर्ट करके इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं एट ए फिक्स कन्वर्जन प्राइस, उस बॉन्ड को हम क्या कर कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल convertible bond। So our 18th question is in ASBA. ASBA is application supported by blocked amount। So you would be knowing this because आजकल जो बैंक्स में है आसबा की डिमांड बढ़ चुकी है। So in ASBA an applicant can make dash applications from a single deposit account। एक सिंगल अकाउंट से वो कितने एप्लीकेशंस
डाल सकता है एसबा में। एसबा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक डॉक्यूमेंट। सो फ्रेंड्स, एसबा क्या होता है, लाइक अगर कोई न्यू कंपनी है जो अपना आईपीओ लाने जा रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने जा रही है, तो जितने भी लोग हैं जो आईपीओ में सब्सक्राइब करने वाले हैं, सो जितने अमाउंट का वो शेयर सब्सक्राइब करने वाले हैं, उतना अमाउंट जो है वो अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाता है। सो इन दैट जो एप्लीकेंट है वो कितनी एप्लीकेशंस एक अकाउंट से दे सकता है, सो दैट इज 5 applications. So a person can give 5 applications from a single amount account. So इसमें जो है फंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है तब तक जब तक उसको वो शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं। अगर शेयर अलॉट हो जाते हैं तो दैट अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एंड इफ शेयर्स आर नॉट अलॉटेड टू द पर्सन, सो दैट लीन देर विल बी ए लीन विल बी मार्क ऑन द अकाउंट, और वो लीन जो है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हटा लिया जाता है। So let's move to next question. Question number 19. So question number 19 is, dash is a document that guarantees the buyer's payment to the seller. It is issued by a bank and ensures the timely and full payment to the seller. ये एक डॉक्यूमेंट है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो गारंटी देता है बायर्स को पेमेंट, बायर्स की जो पेमेंट के लिए सेलर को, इट इज इशूड बाय बैंक एंड एंश्योर द टाइमली एंड फुल पेमेंट टू द seller. So that document is called letter of credit. So friends, now we have come to the last question of the day, that is question number 20. As per Basel III, banks will be required to hold a capital conservation buffer of dash percent. जो बैसल थ्री के नॉर्म्स है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो बैसल है, आरबीआई इज फोकसिंग ऑन बैसल वेरी प्रॉम्प्टली, बिकॉज बैसल थ्री की जितनी भी गाइडलाइंस थी वो हमारे अप्रैल 20 तक अप्लाई हो जानी चाहिए थी बैंक्स में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। एंड इफ यू प्रिपेयर बैसल टॉपिक प्रॉपरली यू विल बी डेफिनेटली स्कोरिंग 3 to 4 मार्क्स आउट ऑफ बैसल। तो बैसल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, यू शुड बी वेरी वेल नोन विद दैट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बैंक्स को जो है कितना परसेंट कैपिटल जो है कैपिटल कंजर्वेशन बफर के लिए चाहिए, सो हाउ मच परसेंट इज रिक्वायर्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज 2.5%। सो 2.5% का जो कैपिटल है वो रिक्वायर है। So friend, this is a set of 20 questions, and these are the memory recalled questions. These questions have already come in the previous exams of JIB PPB subject. So go through these questions, and you should also make notes of these questions. And also friends, you should see that from which area the questions are asked. So in future, in coming exam, questions will be asked from the same topics, only some differences will be there. So friends, let's move to our one topic that is very important, and 1 to 2 marks is definitely going to come from this topic, so I have covered in this video only. So let's see that topic, and this topic is banker customer relationship. So many times friends, these questions are asked in the exam, so let's discuss. So first is debtor creditor. In banker customer relationship, the bank is a debtor and customer is a creditor. जो बैंक है वो डेटर होता है और कस्टमर क्रेडिटर होता है। वो कब होता है? ऑन ओपनिंग एन अकाउंट, जब भी कोई हमारे साथ अकाउंट ओपन करता है, द बैंकर अज्यूम द पोजीशन ऑफ ए डेटर, ए डिपॉजिटर रिमेन्स अ creditor of his banker, so long as his account carries a credit balance. The relationship with the customer is reserved as soon as the customer account is overdrawn. मीन्स कि जो डेटर क्रेडिटर का जो रिलेशनशिप है वो तब तक रहता है जब तक हमारे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। अगर हमारे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो जो बैंकर है वो बन जाता है डेटर एंड द कस्टमर इज क्रेडिटर। And the relationship with the customer is reserved as soon as the customer account is overdrawn. Okay, let's see next.
क्रेडिटर डेटर, बैंक इज क्रेडिटर एंड कस्टमर इज डेटर। ये कब होता है? सो व्हेन द बैंक लैंड्स मनी, जब भी बैंक जो है उधार पैसे देता है कस्टमर को, द कस्टमर the customer is borrower and the bank is the lender. The relationship between the banker and the customer is therefore that of a creditor and debtor. Means अगर कस्टमर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो कस्टमर डेटर, और अगर कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो कस्टमर क्रेडिटर। तो अगर ये चीज़ आप याद रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली रिमेम्बरिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज बैंकर एज ए ट्रस्टी। बैंकर कब ट्रस्टी होता है? ऑर्डिनरली ordinarily a banker is a debtor of his customer in the report of the deposit made by the latter, but in certain circumstances he acts as a trustee also. A trustee holds money or asset and performs certain functions for the benefit of some other person called beneficiary. For example, if a customer deposits security or other valuable with the banker for the safe custody, the latter act as a trustee of his customer. अगर कोई कस्टमर है वो कुछ डिपॉजिट करता है सिक्योरिटीज या वैल्यूएबल थिंग्स फॉर द सेफ कस्टडी, तो उस केस में जो है बैंकर एक ट्रस्टी होता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेली एंड बेलर रिलेशनशिप। बैंक जो है वो बेली है और कस्टमर बेलर है। एज पर सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर one person delivers goods to another person for some purpose. The person delivering the goods is bailor। जो person जो goods दे रहा है वो bailor होगा, and the person receiving the goods is bailey. After the accomplishment of the purpose, the bailey needs to return these goods to the bailor or dispose of them according to the direction of the bailor. So in this way जो है बेलर और बेली का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। सो बैंक एज एन एजेंट, द बैंकर एक्ट्स एज एन एजेंट of his customer and perform a number of agency functions for the convenience of his customer. For example, he buys or sells security on behalf of his customer, collect check or checks on his behalf and makes payment of various dues of the customer। जब भी हम कोई चेक कस्टमर का कलेक्ट करते हैं, लाइक क्लियरिंग में कस्टमर जो है वो हमें चेक दे रहा है, तो दैट टाइम जो बैंकर है वो एजेंट बन जाता है एंड द कस्टमर इज प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ लेसर एंड लेसी। So banker as a lessor and customer as lessee. Similarly, when customer hires a safe deposit locker from the bank, जब भी कोई जो कस्टमर है वो लॉकर अगर हायर करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज लेसर एंड लेसी। तो इस केस में जो कस्टमर और बैंकर और कस्टमर का रिलेशन वो लेसर लेसी का बन जाता है। द बैंकर इज लेसी or you can say licensor and the hirer of safe deposit locker is the lessee, licensee or tenant. Let's see one more relationship, that is indemnifier and indemnified. Bank is the indemnified or indemnity holder and customer is indemnifier. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by conduct of promisor or conduct of any other person is called contract contract of indemnity। तो indemnity में आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, अगर किसी से डीडी खो जाए, मिसप्लेस हो जाए, फिक्स डिपॉजिट मिसप्लेस हो जाए, ये लॉस्ट हो जाए, इन दैट केस हम जो है उनसे इंडेमनिटी लेते हैं। इन इंडेमनिटी व्हाट हैपेंस, वन पार्टी वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज। अगर इन फ्यूचर उसका कोई दूसरा डिमांड ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इन दैट केस जो भी लॉस होगा वो उस इंडेमनीफायर को देना होगा, दैट इज कस्टमर। सो लेट्स सी ट्रांजेक्शन कि किस ट्रांजेक्शन में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या है। डिपॉजिट इन द बैंक, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द रिलेशन इज डेटर क्रेडिटर। लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से कोई लोन ले रहा है तो बैंक कस्टमर रिलेशनशिप जो है क्रेडिटर डेटर। सेफ कस्टडी, जस्ट वी डिस्कस कि सेफ कस्टडी में बेली बेलर, लॉकर में लेसर लेसी। कलेक्शन ऑफ चेक,
कलेक्शन ऑफ चेक में एजेंट प्रिंसिपल, परचेज ऑफ ए ड्राफ्ट डेटर क्रेडिटर, पेई ऑफ ए ड्राफ्ट ट्रस्टी बेनिफिशियरी। जब हम पेमेंट कर रहे हैं ड्राफ्ट की उस टाइम पे जो बैंक है वो ट्रस्टी होगा और जो अदर पर्सन है वो बेनिफिशियरी होगा। प्लेज के केस में पॉनर पॉनी और प्लेजी प्लेजर, लाइक वी टेक gold as a pledge, so that time we are pledgy and the customer is pledger. So in this way, मॉर्गेज के केस में मॉर्गेजी मॉर्गेजर। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जब भी कोई कस्टमर हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देता है तो उस केस में जो बैंक है वो एजेंट है एंड अदर इज प्रिंसिपल कस्टमर। सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, एजेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन फॉर इट्स डिस्पोजल। अगर मनी डिपॉजिट किया और उसका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो दैट टाइम इट इज ट्रस्टी बेनिफिशियरी। आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक, अगर किसी भी कस्टमर का कोई आर्टिकल बैंक में छूट जाए तो हम उसके ट्रस्टी हैं एंड दैट कस्टमर इज बेनिफिशियरी। शेयर्स गिवन फॉर सेल, एजेंट प्रिंसिपल। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेटी हाइपोथिकेटर। सो फ्रेंड्स, these are the some very important points because many time questions are asked from this banker customer relationship. So इससे आप अगर याद कर लें अच्छी तरह, so you will be definitely getting 1 to 2 marks. So question can become like a case study type of questions, so there you have to be very carefully give the answer. So friends, thank you. Thanks for watching this video, and please like this video and share this video with your friends who are preparing for jaiib exam, and subscribe to our channel if you have not subscribed, and don't forget to press the bell icon to stay updated with our latest videos, and also visit our previous videos so that you can have a revision, because friends अब बहुत ही कम टाइम बच चुका है एंड यू शुड ऑल्सो बकल अप योर सेल्फ ताकि आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करें एंड यू कैन गेट थ्रू द एग्जाम easily. Thank you friends, have a nice day and best of luck for your preparation.